This press media briefing is in regard to a few hours before former ANSU Leaders Forum press statement regarding the ongoing ANSU election process. Involvement of former ANSU Leader Forum, it started on 16th October and today 29th October. They took almost 13 days without any solution. So on this perspective, I would like to highlight and place my few points on this regard. Number one, clearly former ANSU Leader Forum, they have stated, Chairman Techinyera sir, that Mr. Dodum has totally misused the constitution of ANSU very drastically, and former ANSU President 𝘼𝙨𝙤𝙠 stated that he has never witnessed such a misuse of constitution of ANSU. And they have took honorable exit that from today onwards, they are no more responsible for any untoward incident or law and order, any kind of situation erupt, and stated that it will be responsible of Mr. Dodum, so-called the caretaker president. Here I would like to clearly give a message and reply to our former ANSU Leader Forum also. Kindly do not make yourself mockery also. On 16th of October, you have interference on our protest and dharna in All Nishi Students Union office by giving assurance that you will deliver a justice to all the aggrieved protesters who have seated dharna for 6 days. And on that also, it was clearly stated that believe on you people, believe on your forum, you will deliver a justice. On that context, we vacate. On your hope, we withdraw our peaceful protest and dharna. And one very clear-cut message to the two representatives of former ANSU Leader Forum, Sri Gyabang Joram, former ANSU President, and Sri Nyanya Golo, former General Secretary. We, the protester and aggrieved student leader, clearly state, if you could not deliver a justice, वो आपका घर को न्यान्या गोलो और जाबंग जोरम आपका घर को जलाया जाएगा बोल के, वो दो बात में आप दोनों एकदम सहमत था. You assure yes, if you both cannot deliver any justice, we the protest can burn down your houses into ashes, which has been recorded in video. Number two, the first withdrawal is really a condemnable act. We do never expect such a senior leaders of former ANSU team for such a issue which is being arises right now in upcoming general election of All Nishi Student Union. It's proof that the way we have anticipate you as a former leader of ANSU, which you have pioneered, which you have engineered the institute of ANSU, today it shows that a weakness in your leadership also. So your withdrawal is really condemned, and we won't let you run away from this issue also, because we won't let us make mockery by any one of you. And second, as earlier in our earlier representation, our representation to Nishi Elite Society has anticipated that the misuse of the constitution by caretaker president and the temporary constitution being chaired by the former constitution amendment ka jo chairman Sri Yurum Tamin, who has been appointed as the chief election commissioner for upcoming ensuing election. On that pretext, we have clearly stated that this is we are anticipating a clear-cut misuse of the constitution. So NA's intervention has endorsed the former ANSU Leader Forum, which bring no result today after 13 days of engagement. So it is very sad to see the whatever development is happening here at Siddhartha Hall, and how this outgoing caretaker president and the electoral registration committee, they are misusing and tampering and malpracticing the registration also. Let me highlight you all what exactly they have done. So far, now the registration is in a public domain. On that public domain, after going through a scrutiny, we have found 80 plus proxy voters in Neris, second DNGC 500 plus, RJU 200 plus, ALA 80 plus, St. Clair 50 plus, and many more, where we were never expected that Nishi student will pursue study over there in some other district colleges.
And moreover, they took almost 17 days for this verification. और ये 17 days में ये हमारा जो इलेक्शन का जो है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन जो टीम है उनका एक्सरसाइज को आप ध्यान से सुनिए। नॉन निसी को आंसू में एलिजिबल करवाता है, इनका जो 17 डेज का जो एक्सरसाइज है। उसके बाद नेरिस डीएनजीसी आरजीयू कुछ मिनट का ही रास्ता है, वहां में जो 1000 प्रॉक्सी को ये वेरीफाई नहीं कर सकता है। और 500 प्लस जो जिनन स्टूडेंट है जो एलिजिबल निसी है उसको जो है यहाँ में जो है लिस्ट से आउट किया जाता है। दिस इज द वर्क डन बाय द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन टीम बीइंग लीड बाय लिंगडम क्योदा। तो आप सब ध्यान से सोच के देखिए, 17 डेज में इनका काम, इट मीन्स दे वर ओनली टेम्परिंग एंड नॉन निसी वोटर्स को जो है डालने में बिजी रहा और प्रॉक्सी वोटर्स को जो है डालने में बिजी रहा। ये 17 डेज में जो है सही स्टूडेंट 500 प्लस स्टूडेंट को आउट करने में बिजी रहा। सो इट इज क्लियर कट शोज देयर इल इंटेंशन। तो हाउ वी कैन डाइजेस्ट, ये एक मेरा हर एक किसी को एक मैसेज है। अगर इसको अगर हम जो है रियली मतलब कुछ भी आवाज अगर नहीं उठाएगा, this is a total collapse of an institute so called the All Nisi Student Union, because ANSU is not a private property of any individual. This is a social sanctioned institute. So here I would like to highlight one more recent development regarding to branch student union. आप देखिए अपर सुबनसिरी निसी स्टूडेंट यूनियन नॉन निसी कैचमेंट एरिया का स्कूल को भी जो है यहाँ में इलीगली जो है डेलीगेट लिस्ट में इनरोल किया गया है। वहां का ब्रांच स्टूडेंट यूनियन का जो रिकमेंडेशन ऑफ डेलीगेट्स को जो है टेम्पर्ड एंड चेंज किया गया है दिस इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन टीम ने। और यू हैव विटनेस प्रेस ब्रीफिंग बाय सो ANSU का साइड से भी प्रेस ब्रीफिंग किया गया है कि उनका जो डेलीगेशन जो रिकमेंडेशन को जो है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन कमेटी लीड बाय लिंगडम क्योदा जो है टेम्पर्ड किया गया है और चेंज किया गया है। सेकेंड, वन मोर ब्रांच स्टूडेंट यूनियन ऑल गैपिन एरिया स्टूडेंट यूनियन, उनका भी केयर टेकर जो है ब्रांच स्टूडेंट यूनियन का हेडेड बाय आपका जो है थॉमस डाकपे, वो क्लियर कट स्टेट किया है कि उनका जो रिकमेंडेशन जो डेलीगेट को है टोटल टेम्पर्ड एंड चेंज किया गया है। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन टीम जो है मनमानी से अपना हिसाब से द पर्सन हुम ही नेवर नोस एंड पर्सन हु डजंट रिसाइड देयर उनको उनका वहां में डाला गया है और उनका जो सिग्नेचरी को जो स्कैन करके जो है यूज किया गया है। दिस इज ए टोटल मतलब आपका जो इलीगल है और ये प्रैक्टिस जो है इट कैन इनवाइट एनी काइंड ऑफ द लॉ। इसलिए जो है आप सोच के देखिए जो है ये पर्सन जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन जो टीम है इनका एक बनावटी एक साजिश है, इनका टीम है जो है इनका काम है प्रॉक्सी को घुसाना, जेन्युइन वोटर्स को हटाना, उसके बाद नॉन निसी को जो है ANSU में पार्टिसिपेशन करवाना। उसके बाद देयर इज अनदर प्लांटेड टीम इज रेडी सो कॉल्ड द इलेक्शन कमीशन हेडेड बाय द टेम्पर्ड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मिस्टर यूरुम तामिन, जो आज का तारीख में जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तौर पे अपॉइंटेड है। ही इज वेटिंग देयर व्हेन दिस इलीगल प्रॉक्सी वोटर्स विल ऑफिशियली हैंडेड ओवर टू हिम, ताकि वो इलेक्शन को जो है एकदम इलीगल वे से करवाने के लिए कब शुरू करेगा बोल के। एंड माय क्वेश्चन टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो, डिस्पाइट सच ए ह्यू एंड क्राई इन दिस अपकमिंग ANSU इलेक्शन, व्हाट इज देयर इंटेंशन टू प्रोवाइड सच ए लार्ज नंबर ऑफ फोर्स? क्या बाहर में जो है इतना 200-300 फोर्स करवा आप जो है पब्लिक और स्टूडेंट लीडर्स को जो है दिखाकर सिक्योरिटी का मेजर है बोलकर जो इनसाइड द सिद्धार्थ हॉल में मन मर्जी करने देने के लिए बैरियर क्रिएट कर रहा है क्या? अगर ये है बोलने से I, Sri Ashok Doka, has a president candidate for upcoming ANSU election. I do state, मेरा सिर्फ 2 ही पॉइंट रहेगा। फर्स्ट, द फॉर्मर ANSU लीडर फोरम्स, आप इस इशू से आप रन अवे नहीं कर सकता है। सेकेंड, द सोल रिस्पॉन्सिबल विल गोज टू मिस्टर ब्याबंग जोरम एंड न्यान्या गोलो, has promised and committed by you in ANSU office while asking and specifying us to withdraw from the All Nisi Student Union. And third, Mr. Lingdam Kyoda, this is not your property. ये ANSU है और आपका मन मर्जी यहाँ नहीं चलेगा। एनीथिंग, अगर कल को कुछ भी हुआ, किसी का जान गया, किसी का हाथ गया, आग गया, नाक गया बोलने से, यू आर द रिस्पॉन्सिबल, सोलली रिस्पॉन्सिबल। और आपका साथ साथ जो है
फॉर्मर आंसू लीडर फोरम भी रेस्पॉन्सिबल होगा इक्विवेलेंटली, और जो है यहाँ में जो है नेक्स्ट को भी क्वेश्चन किया जाएगा। इवन एट द लास्ट द मास्टरमाइंड मिस्टर दोदम, यू विल बी द हाईएस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द अनटुवर्ड इंसिडेंट इन ए कमिंग डेज। आप लोग मत सोचो मनमानी करके आप लोग इलेक्शन करवा लेगा। आप लोग कहाँ में इलेक्शन करवाएगा? मार्स में करवाएगा ना, जुपिटर में करवाएगा ना, गुवाहाटी में ना, दिल्ली में, ईटानगर अंदर तो करवाएगा ना। और ये बात को भी मत बोलो यू आर नॉट किंग ऑफ निशी। आप यहाँ में जो खुद को मत सोचो कि आप मालिक है। हम सब जो अंडा है, हम कुछ नहीं बोल सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। हम यहाँ अपना जान को भी जो हथेली में रखकर हम जो है आज आपका सामने ये ब्रीफिंग कर रहा है कि जस्टिस को एट एनी कॉस्ट आई विल प्रिवेल इट। फेयर इलेक्शन हमको डिमांड है सिंस द डे वन। फेयर इलेक्शन करवाइए, फेयर कंपटीशन होना है। लूजिंग एंड विनिंग इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एनी पॉलिटिकल इलेक्शन, लेकिन जो फेयर कंपटीशन होना है। दिस इज माई वेरी क्लियर कट मैसेज टू the Mr. Lingdam Kyoda, Mr. Nabum Dodum, and so-called the former ANSU leader forum. Also, if in the days to come, if anything happen to our student leaders from police forces side, then I would say this is a in advance message to our honorable Home Minister also. Please ponder in it. Later on, you may not regret for such a untoward incident, whatever may be happen. So lastly, मेरा यही और एक बार बोलने का यही मेरा बोलना चाहूंगा कि think twice, rethink before go ahead with such ill intention election. I, Shri Mr. Ashok Doka, I won't let it happen. Thank you.